all minorities if the words, ये देखिए 21 का क्वेश्चन नहीं 2002 का है, हाँ ओके 1A क्वेश्चन, all minorities if the words all minorities in Article 30 are replaced by the word all sections of citizens having distinct language or religion, what fundamental rights of minorities would be affected? 30 की बात कर रहा है, 29 की नहीं कर रहा। 29 में तो ऑलरेडी ऑल सेक्शंस है, 30 में क्या है? Yes, certain rights have been given only to minorities. So if this is replaced, that protection, that privilege, that special treatment to minorities will be gone. ठीक, अब इसका आंसर कैसे शुरू करना है देखो जरा। पहले तो ये बताओ कि व्हाट विल बी माइनॉरिटीज, सिंपली एक लाइन में, नॉट ज्यादा। ठीक, देन अंडर आर्टिकल 30 व्हाट आर द प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शंस गिवन टू देम। ठीक, then come if this word, this term, all minorities is replaced by all sections, then you can say if words permit all sections, we have already seen in Article 29 covers even majority, right? So in that case, if this is replaced, even majority will also, those sections which form majority or which are dominant, they will also get these privileges and the purpose of Article 30 itself will be defeated. But they will still continue to hold their rights. Of course, but others will also get that. Others will also get that. So there, I mean, it will be then open to all. Then what privilege is there when it is available to everybody? So purpose, for what purpose 30 was created? That was to exclusively have certain rights for minorities. But all sections में वो majority भी आ जाएगी. And this will get, if not totally against them, diluted to a large extent. So it will run afoul of Article 15 also then. If all sections are given, then majority institutions will also have a right to discriminate. So it will also be. Don't go for here and there. Focus only there. 29, 30 पे रहो. So what are the privileges जैसे कह रहे हैं? नहीं, देखो 15 को कैसे लाओगे? 15 is a general non-discrimination. It talks about general non-discrimination. उसको वो Article 15(4) में जैसे 15(4) में तो जो even आपकी reservations हैं, they are not applicable to minority institutions. हाँ, फिर तो करनी नहीं लगेगी ना, फिर तो मतलब अगर देखो लाना चाहो तो बहुत कुछ ला सकते हो, लेकिन पहले जो मैं ये बता रहा हूँ ना, इसको तो लिखना ही लिखना है। अगर आपके पास वर्ड लिमिट कुछ बच जाती है, यू कैन इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो. There is no harm. I mean, it's not that you are putting something wrong in the answer. It's correct. Constitutionally, it's correct. You are quoting the right provision, right reason also. No harm in that. But जो पहले मांगा गया ना, पहले उनका पेट भर दो. उसके बाद अगर कुछ जरूरत होगी तो मीठा खिला देना उनको. बस अगर वर्ड्स बचते हैं, और इसी में आपके वर्ड्स नहीं बचेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको. आप माइनॉरिटीज डिफाइन करोगे, आप 30 को डिफाइन, उसमें प्रोविजन बताओगे, ऑल सेक्शंस को करने से क्या होगा, कंक्लूजन में आ जाएगा आपका ये, तो आपके वर्ड्स ही नहीं बचेंगे. अगर ये 10 मार्क्स का हुआ तो 15-20 मार्क्स का है तो फिर आप ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं.